کرو یہ سر یہ بات یہ ہو گئی فریش کنسپریسی. مگر یہ بات بھی نہیں کر رہا ہے تو یہ مجھے کنسپریسی تو ذرا مشکل لگ رہی ہے. کنسپریسی پھر اس کو ایسے کرتے ہیں, میں دوسری باتیں ختم کر لیتا ہوں, اس کو پھر کل پورا کیس لا میں آپ کو لاگت دے دوں گا. کیس لا میں دکھائے گا, اس پہ کیس لا ہے. آپ کی بات صحیح سر, یہ اس میں ابھی سارا کچھ ہے کنسپریسی میں جو آپ نے آبزرویشن دی ہے. یہ جو ججمنٹ آپ پڑھیں گے نا اس میں بھی ججمنٹیں ہیں. مجھے پھر بار بار آپ بات یہ before I read a judgment I like to read the plain language of the provision. Plain language of the provision does not seem to suggest that subsequent disclosure of a conspiracy or subsequent calling upon someone else to please fulfill the conspiracy that I entered into earlier. 100% جو میں بات کر رہا ہوں that is in accordance with law. I am saying with full confidence. میں اور آپ ایک کنسپریسی کرتے ہیں, میں لاہور میں جا کے تیسرے بندے کو شامل کرتا ہوں ایون وداؤٹ یور نالج, وہ تیسرا بندہ بھی شامل ہوگا اور آپ بھی اس کے ایکٹ کے ذمہ دار ہوں گے. اس جرم کو آگے بڑھانے کے لیے یہ جا رہا ہے کہ 120A میں ایسا نہیں لکھا ہوا. بالکل It may be interpreted somewhere else. یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اسی طرح دیکھیں نا, آپ اس کیس کو ہی لیجئے, آپ اس کیس کو لیجئے کنسپریسی کی. آپ مان جائیں کہ مسعود محمود کے ساتھ بھٹو صاحب کی کنسپریسی ہے, تو بھٹو صاحب نے موقع والے بندے کو تو نہیں کہا کہ مار دو, نہ وہ کنسپریسی میں شامل تھے. یعنی وہ آگے جب ایگزیکیوٹ کرنے جائیں گے ہو سکتا ہے اس شخص کو مزید لوگوں کی. اب آگے بڑھتے ہیں. کلیئر ہو گیا سر. یہ کنسپریسی کا I will put it this way, you have not been able to persuade me, but آگے بڑھتے ہیں. کلیئر ہے جی, ایسے ہی ہے. مجھے آپ کیس لا میں دے دیجیے گا بعد میں. کیس لا اس پہ تو کیس لا کی ضرورت ہی نہیں ہے. برحال یہ پہ چھوڑ دیں, آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں. سائڈ پہ رکھتے ہیں. ابھی آپ اس کو ٹیسٹ پہ ہی رہیں کہ مسعود محمود کو آپ کیا سمجھ رہے ہیں, آپ اس پہ رہیے نا. اگر آپ اگر اس کو مانیں گے نہیں تو آپ کی ڈیفینیشن جائے وہ ریلیونٹ ہی نہیں رہے گی. میری بات ریلیونٹ ہی نہیں, آپ اس کو ایسے لے لیجئے, نہ مانیے میری بات. اب میں اگلی بات میں نے یہ کہا کہ اگر یہ آپ والی بات مانے پھر then it is not a conspiracy. ٹھیک ہے, اگر میری بات مانے تو میری بات ماننے کے باوجود بھی it does not come within that definition because there was no agreement. مسعود محمود کا بھٹو صاحب سے کوئی ایگریمنٹ ہوا ہی نہیں because he did not agree to that. دیکھیں فرق یہ, ہم دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں. میں ایک طرف سٹریس کر رہا ہوں, آپ دوسری طرف سٹریس کر رہے ہیں. میں سرنڈر کر جاتا ہوں آپ کی بات. نہیں چلیں آگے بڑھتے ہیں. میں چھوڑ دیتا ہوں, کوئی بات نہیں. نہیں گو آن, چلیں, کوئی نو ایشو. اب اس بات کو آپ رجسٹر کر لیں, یہ کنٹینشن کو کہ یہ کنسپریسی بنتی ہی نہیں ہے 120A کے تحت. چلیں اس کو یہاں لے لیں, چھوڑ دیں, اگلی باتیں چھوڑ دیں. اب نیکسٹ پوائنٹ, مان لیں آپ پرزیوم کر لیں کہ یہ بات اس نے سچ کہی ہے. اب اس کو آگے لے کے چلیں. نیکسٹ پوائنٹ از, اب یہ چیز نوٹ کیجئے. He said, I was reminded several times by Zulfikar Ali Bhutto and goaded by Saeed Ahmed and Mr. Bajwa. اس کے باوجود he has not, this is very important, he has not said a single word کہ I ever contacted میاں محمد عباس. یہ آپ probability کے ٹیسٹ پہ آ جائیے کہ آپ ایک بندے کو شامل کرتے ہیں, اس کو ٹاسک دیتے ہیں, وہ بندہ کہتا ہے جی کہ مجھے انہوں نے 10 دفعہ ریمائنڈ نہیں کرایا, کتنی دفعہ ریمائنڈ کرایا, اینڈ آئی واز ریمائنڈیڈ بائی ادر پرسن ایز ویل. تو نیچرل کانسیکوینس کیا ہے کہ آپ دوسرے کو جا کے کہیں گے تو صحیح نا. آپ نے پورا چیف پڑھا, اس نے ایک جگہ بھی کہا کہ میں نے دوبارہ اس سے پوچھا کہ بھی کیا کیا ہے, اس نے کہ یہ بات کی نہیں نا. تو یہ سیکنڈ بات ہے کہ اس وجہ سے بھی آپ اس کی بات کو نہیں مانیں گے کہ یہ بات پروبیبل نہیں لگتی. اور اگلی بات اب یہ ہے کہ اس میاں عباس is already on a task which has been assigned to him by is Director General of that time
on the conspiracy of Zulfikar Ali Bhutto. So why he will be involved? What for? So had it been the situation that Mia Abbas was in the loop, he knew the task, this is their case, so why directly not talk to Mia Abbas? If ID wants to get something wrong done through a SHO or a police inspector, why he will call to DIG? Because this is not a legal act. This is illegal act. He will talk directly to that man. As if Lordship want to do, a civil judge to do something. ये बताएं This is exactly what I'm saying. ये मैं आपसे सरेंडर कर गया, मैं मान के जोड़ दे तो ये बताएं ये जो आप अग्रीमेंट की बात वो पंजाबी में एक कहावत है जी कि तगड़े दा सत्ती भी 100, मैं तो मान गया हूँ आपकी बात। ये आप जो बात कर रहे समझ हैं नहीं, अब बाद में बताऊंगा। आप बात करें एग्रीमेंट की, सपोज करें आपकी बात हम लेते हैं, उन्हें एग्री नहीं किया लेकिन उनके एक्शंस ये दिखा रहे हैं तो उसके बारे में आप ये तो मैं बता रहा हूँ ना, आपने बिल्कुल सही बात की। पहली बात ये है कि मैं कहता हूँ कि एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है, इनको भी नहीं पता जी, मुझे ही पता उसका मतलब, ये इनको नहीं पता। ये पोठोहार की मिसाल नहीं है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है जी। पहली मेरी आर्गुमेंट है कि ये कंस्पिरेसी है ही नहीं। ठीक। आप कहते हैं नहीं जी, आप इसको माने कंस्पिरेसी जी, तो फिर नेचुरली उसके कॉन्डक्ट को देखेंगे ना हम जी। तो उसने क्या किया? मेरी बात, प्राइम मिनिस्टर की बात सुन के व्हाट ही डिड, अभी मैं चीफ पे हूँ जी जी, क्या कि उसने कहा कि आई रिपीटेड दीज वर्ड्स इन ए परप्लेक्स स्टेट ऑफ माइंड बिफोर गुलाम अब्बास, दैट्स ऑल, व्हाट एल्स, नथिंग। Would it be probable a task has been assigned by the Prime Minister and that too Bhutto, who as per their case will not tolerate any nonsense? So क्या prudent man क्या कहेगा? ये मान लेगा कि आप 4 महीने फिर खामोश ही रहे? You never said in your chief कि I then asked so and so be on the task. ये मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरी, I hope I am clear now. Thank you. Now I'm coming to the point that if Ghulam Abbas was already on the task, this is their case. So why Prime Minister will ask this man? Why? Why not directly to that person? And why the Prime Minister will send Sayyid Ahmad Khan and Bajwa to this man? Why those were not sent to Mia Muhammad Abbas? Mia Abbas was in Pakistan, he was at Islamabad in the same office. So that makes it highly improbable. No prudent man will believe this story. This doesn't fit in the circumstances of the case. And secondly, next point is, this is his claim that at page 75, volume 2, is a part of his examination in chief, that when after Lahore's incident, he was called by the Prime Minister. And Prime Minister said, you have not achieved the task. And you must do it. You are responsible. Now kindly see what he says. I will read from my notes. I will not go to the book. इस पेज पे जी वो सर ये पेज है 75 है, वॉल्यूम 2, पेज 75 वॉल्यूम 2। ये अगर जनाब आप पढ़ लें इसको, ये अब ये चीज से मैं पढ़ रहा हूँ। आई हैव नॉट टच क्रॉस एग्जामिनेशन। I was summoned, second line sir, I was summoned by Mr. Bhutto on our return from Rawalpindi. He was peeved and agitated. He said that the actual task has yet to be accomplished. अब उनका जवाब शुरू हो जाता है। I said to him, at your behest,
an idea conceived by you was carried out and communicated by me to Mia Abbas, who has already your direction through my predecessor. अपने आप को भी निकाल रहा है ना? And the fact remains that both you and I and my subordinate will be taken to the task by God Almighty, but I will not carry out any such order anymore. Ab, can a Director General, who first, it is on your assumption that there was a conspiracy, can he say so to the Prime Minister in so many words? And then the next part, he claims that I have very good relations with the family. I met the deceased several times. We are from the same town. So does it appeal to the common sense? Would a prudent man will believe this story? Could it be happen? And more particularly, this is the most important point. After these utterances, your Lordship remain, many of you remain the Chief Justices. Your Lordship, did any registrar of this court can dare to say such thing to the Chief Justice? And that is the Prime Minister. And next submission. If it was so, if we believe he said so, so what was the natural consequence? I don't agree with you there. I encourage the registrar to oppose me on anything. सर मैंने आपका तो नाम ही नहीं लिया। नहीं मैंने आपका नहीं, मैंने जज और रजिस्ट्रार हाई कोर्ट के रहे हैं, हम दूसरी तरफ बात की है। आप अपने तरफ ना लेके जाना। All of you. नहीं सर वो थोड़ा थोड़ा बात निकल जाती है, कोई बात नहीं, but आप you have every right to disagree. मैन लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जी प्रूडेंट मैन है वो, खवातीन का भी इस्तेमाल कर लें वो कह रही हैं। खवातीन का? वो भी तो खवातीन तो सबसे ज्यादा प्रूडेंट होती हैं। खवातीन से तो प्रूडेंट होता ही कोई नहीं है। नहीं, वो कह रही है कि आप प्रूडेंट पर्सन कहें ना। अच्छा सॉरी आई एम रियली सॉरी। लॉ में लिखा हुआ है। क्या प्रूडेंट मैन ही लिखा है ना? हाँ, वो ऑल जेंडर स्पेसिफिक विल बी रेड एज। नहीं मगर आप अगर आप पर्सनल एक्सपीरियंस से जाएं पाकिस्तानी कल्चर में, तो औरतों तो ज्यादा प्रूडेंट होता ही कोई नहीं। खामद को मैनेज करना, ससुराल को मैनेज करना, बच्चों को मैनेज करना, सोसाइटी से डील करना, मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा होती औरत प्रूडेंट है। मलिक साहब ये टीवी पे चल रहा है, वो घर वाले सुन रहे होंगे, छोड़े आगे चले। नहीं उनकी ऑब्जर्वेशन ठीक थी। क्या क्या अब सवाल ये है कि अगर ये बात वाकईतन he uttered these words to the Prime Minister, just so many words, so what would have been the reaction of Prime Minister? Immediately minimum was that he was to have been transferred. यही होगा ना कि अब आप तो इस काबिल नहीं है, चले सैक नहीं करते, ट्रांसफर ही कर दें। He remained DG for 2.5 years. Kindly see. कब तक? मुझे 77 तक, जब 5 जुलाई 77 तक he was DG FSF. 2 years thereafter. Would it be probable? Would any prudent man would believe this? How it is possible? So this was his examination in chief. His story is not. What happened to him thereafter? वो तो पकड़ा गया ना जी, जब वो 5 जुलाई को मार्शल लॉ लग गया, फिर पकड़ा गया। और फिर क्या हुआ? Is he alive? पता नहीं जी, मैं तो पर्सनली नहीं जानता, चौधरी साहब को पता होगा। I don't know. मसूद महमूद जिंदा है, ये कह रहे हैं फौत हो गए। He's died. Thank you, sir. Where he went to America? Taken? But there was nothing. Witness protection तो होता है when you don't know the identity. अच्छा, पाकिस्तान में तो ऐसी चीज नहीं है कोई। उस वक्त तो लॉ नहीं था विटनेस प्रोटेक्शन का। हाँ? और सर ये अब बात मतलब अमेरिका चला गया जी, खुद चला गया या किसी ने भेज दिया, ये तो अब इस पे बहस पे पड़ेंगे, फिर मेरा टाइम बढ़ जाएगा। वो चला गया अमेरिका और मर गया, एंड ऑफ द मैटर।
नहीं because मैं जब सवाल पूछूंगा it will be relevant. सर मैं अभी When you give me permission. नहीं, I don't use, sir, please, that words. I'm using that word. No sir, नहीं, permission नहीं है, मैं तो या आप खत्म कर लें फिर मैं सर कुछ मैं सवाल खत्म हैं। के बाद बीच में वो उसका कैलिफोर्निया आ गया। अब मैं ये बात कर रहा था कि ये स्टोरी अब उसका एग्जामिनेशन इन चीफ सामने रख के I have given 4-5 reasons. Now it is for your lordship to apply the test of prudent man, which includes women as well. You डिक्शनरी सही होनी चाहिए अभी डिक्शनरी को सही कर रहे हैं चलें वो बाद में कर लेंगे जी, अभी इसको करते I हैं। think what the point you're making is not the test of prudent man, because if that we are doing, then we are substituting ourselves with the trial court. What probably you want to say that even an imprudent man would not do this. So that will shake our conscience. नहीं वो फिर सारा केस ही खराब हो जाएगा। इनप्रूडेंट मैन और तो भी फिर ज्यादा है। नहीं नहीं वो तो इनप्रूडेंट मैन वो दूसरी बात मान लेगा। वो भी नहीं मानेगा अभी ऐसी नहीं बहरहाल वो अच्छा जिनको फिर करेंगे ठीक है आगे आप बात करें। Now I will touch some part of his cross examination. I have promised that I will conclude by 1:30. Yeah. Cross examination. It starts at page 82. पहला बताना। अब आप मैंने ये बता दिया कि ये रहा डायरेक्टर। Can you remind us what volume? वॉल्यूम इसका वही 2 है जी, 2 है तो 4 है। वॉल्यूम 2 सर 95 82 से शुरू होता है। इसका 64 से स्टेटमेंट शुरू है PW जी सर जी। अब पेज 95 पे आ जाइए। 95 अब ये प्राइम मिनिस्टर साहब को अब ये चीज इस सारे क्रॉस एग्जामिनेशन में ये पॉइंट ज़हन में रखिए कि ही नॉट ओनली सेड नो टू द प्राइम मिनिस्टर बट इन वेरी हार्श वर्ड ये उसने कहा। अब देखिए क्या हो रहा है। अब ये आई एम एट पेज 95 सर इन द मिडल जहाँ पे ये स्टैंप लगी हुई है ना टेस्टेड की, इसके आगे जरा देखिए। माई फर्स्ट विजिट टू द 4 countries was in the end of January 1975 but it is subject to verification, while the second was in November 76 till the beginning of December 76। अब कैसी बात है, ये फॉरेन टूर भी कर रहा है। ये पहली चीज नोट करें इसका। उसके बाद अगर पेज बोल 101 अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है माय लॉर्ड जस्टिस। यस ये जो आपका क्वेश्चन था सब्सिक्वेंट कॉन्डक्ट, उसके लिए ये बड़ा जरूरी है, प्लीज इसको देखिएगा। ये है पेज 101 पे सेंटर पे सर स्टार्ट हो रहा है आई डिड नॉट। पढ़ूं सर? मिल गया सर जी 101 के सेंटर में ये पैरा स्टार्ट हो रहा है आई डिड नॉट गिव। जी एनी प्लान टू I did not give any plan of mine to Mia Muhammad Abbas for committing the murder of Ahmad Raza Kasuri, since Mr. Abbas has assured me about the execution of the order given to him by the then Prime Minister. Therefore, I did not give any persons to him for the execution of those orders. Question: did you tell Mia Abbas how and from where he had to arrange the arms and ammunition, if any, at all, to be used for killing Kasuri? I did not. So this is a subsequent contract. So kindly see this answer in the context of the statement of the witness that he was reminded by the Prime Minister, he was goaded by Mr. Saeed Ahmad Khan and Mr. Bajwa. अब उसके बाद वो कहता कि मैंने तो उसको कुछ भी नहीं कहा, मैसेज दे दिया अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, वो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। नेक्स्ट पेज 109। Next, can you read the question on this page? The last question. इसके बाद वाला Same page 101, last question. When you made a confessional statement in this case on 14th of August 7, did you know that the attack at the
Life of Kasuri at Islamabad was a part of the conspiracy. I had the hunch. But it was so. Where that is it was. where is the statement of 24th August 1977? ये रिकॉर्ड पे ही है जी. हाँ? ये रिकॉर्ड पे है. अभी अब मार्क करके आपको दे देंगे. चार्ट में बता देंगे सारी उसकी. अगर कोई बता सकता है पेज. अभी बता दो, पेज बता दो. वॉल्यूम 4 Page 687. वॉल्यूम 4 पेज 687. मैंने कहा था पेज 67. मतलब साहब ये अप्रूवल की स्टेटमेंट जो मिस्टर लिखी है उसके अलावा है. हाँ रहता है ना जी. 2 स्टेटमेंट थी ना जी. एक इसकी स्टेटमेंट हुई कन्फेशनल स्टेटमेंट एट इस्लामाबाद एज एन एक्यूज. मिस्टर लिखी है उसके अलावा है. हाँ रहता है ना जी. 2 स्टेटमेंट थी ना जी. एक इसकी स्टेटमेंट हुई कन्फेशनल स्टेटमेंट एट इस्लामाबाद एज एन एक्यूज. अब देखा ना जो फर्स्ट चालान आया इनकम्प्लीट चालान उसमें ही वाज एक्यूज. सो दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ हिज फर्स्ट स्टेटमेंट. पहली क्लू इस्लामाबाद में हुई है. ये 687 पे मुझे नहीं मिला. इस्लामाबाद की ये स्टेटमेंट हुई है 24/8. ये तो जरा दोबारा बताएं. 687 ही है ना ये स्टेटमेंट ये तो कोई कंटिन्यूएशन है. जी जी. क्या सर? 687 is a continuation of something. सर नहीं ये वॉल्यूम 684 से शुरू हो रही है. ये तो अब्दुल खालिक का है. नहीं सर नहीं. वॉल्यूम कौन सा देख रहे हैं आप? 4. और आप तक पहले ये डेट लिखवा. ये डेट आप लिख लें 24/8/1977 हाँ, ये स्टेटमेंट बताइए. इस्लामाबाद. ये पेज है 6. ये कौन सा वो दो ना बेटा. 6 आप कह रहे हैं 4. क्या है? 6 क्या है? नहीं ये तो कुछ और चीज है. किसमें? कौन से वॉल्यूम में? अब तक खोल देना. मैं बताता हूँ. आप पेज भी देख लें उसका. वॉल्यूम 8 में है. वो स्टेटमेंट डेट मान लो. स्टेटमेंट की तो वॉल्यूम तो दे. एक सेकंड सर ये देख लेते हैं फिर हम आगे चलते हैं. हाँ, ओके. ये बच्चे थोड़ा सा समझे नहीं. आपकी वजह से घबरा जाते हैं. 24 अगस्त 1977 का स्टेटमेंट चाहिए महमूद मसूद का. सर आपको मिल गया. वॉल्यूम 8 है पेज 135 है. यही है वॉल्यूम 8. ये बेटर कॉपी उसकी मिल जाएगी. 135 सर. आवाज को छोड़ो ना. क्या करते हो? ये सर इसका सारा चार्ट बना के ना जी आपको दे दिया जाएगा सारा. बट ये बताइए. ठीक है जी. 164 की स्टेट ये वही है जी. ये पहली स्टेट. सर अब प्रॉब्लम पता है क्या है? इतना स्कैटर्ड रिकॉर्ड है कि सारी देखने पड़ते हैं. ठीक है अप्रिशिएटेड. और ये बेचारे ये सारा क्रेडिट इन ये 3 बंदे जो खड़े हैं इनको जाता है. 141 पे डेट है इसकी. हाँ. 24/8 तक. वही है ये. तो ये तो बेसिकली ये स्टेटमेंट. सर अब आगे चलो सर. प्लीज. अब 109 पे सर. 109 है. हैदर अब जरा अलर्ट रहो. अब सर अब ये मेरा ख्याल वो वेल्च को तो मैंने टच नहीं किया था. बट बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जो जिसमें जनाब का नॉलेज बड़ा रेलेवेंट है. ये क्लेम करता है कि 74 में इसने वेल्च को फोन किया और बताया कि जी टेलीफोन पे कि भी आप ये उसकी टेक केयर करें. अब उस वक्त 74 में कोयटा के लिए एसटीडी फैसिलिटी नहीं थी. वो सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग